साइबर खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है, एक संयुक्त प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। हमारे भविष्य ने हमें अवसर दिया है कि हम संवेदनशीलता के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने और सार्वजनिक सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे। हालांकि यह कार्य अकेले सरकारों के द्वारा संभाला नहीं जा सकता, सरकारों ने भी सबको साथ में लेना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य साइबर सक्सेस वर्ल्ड का निर्माण करना है, न कि साइबर फेलियर वर्ल्ड का। साथ मिलकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने हेतु इन टेक्नोलॉजी की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। Thank you. So with this guidance of Honorable Health Minister, we continue to work towards prevention and reduction. Thank you. So now floor is open for questions and answers. One by one, please. First, 1, 2, 3. जब आपने बोला कि पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है, तो जिसका पैसा ब्लॉक हुआ है उसको वापस कैसे मिलेगा? वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। वो बैंक्स में जाते हैं और बैंक से उनको टर्न अवे कर देते हैं। और फिर जैसे अगर कोई ड्राइवर है या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता है कि वो बार बार जाके पुलिस स्टेशन से फॉलो अप कर सकें। तो एक उसका क्या निवारण है? और दूसरा, आपने बताया कि फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारे ऐप्स और फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो इसमें चाइना का कितना वॉल्यूम है, मनी वाइज एज वेल एज परसेंटेज वाइज? Okay. So first question is कि पैसा आपने ब्लॉक तो कर दिया लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। Yes, we agree with that. इसमें there are two states which are doing well. इसमें दो मॉडल हम लोग बता सकते हैं। एक गुजरात में है जो कि लोक अदालत के जरिए करते हैं। लोक अदालत में जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो ऑर्डर दे देते हैं भाई कि द अदर पर्सन इज नॉट अपीयरिंग, सो वो नोट जिसके अकाउंट में पैसा है उसको नोटिस दी जाती है। अगर वो 1 या 2 हियरिंग के बाद अगर अपीयर नहीं करता है तो फिर वो एक्स पार्टी ऑर्डर पास करके रिस्टोर कर देते हैं। सिमिलरली कोर्ट में कर्नाटका में एक मॉडल चल रहा है जिसमें विक्टिम डायरेक्टली कोर्ट में जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैंगलोर के पास जाते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो फिर एक रिपोर्ट मांगती है लोकल एसएचओ से कि आप अपना तफ्तीश करके रिपोर्ट बनाएं। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर कोर्ट ही समन करता है जिसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। 99.9% में वो आदमी कभी आता नहीं है, तो कोर्ट भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर देता है। ये दो मॉडल्स चल रहे हैं। नाउ इसके ऊपर दिस इज वन इम्पैक्ट ऑनरेबल एचएम हैज आल्सो आस्क्ड अस टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस। तो इसके लिए वी हैव कंसल्टेड ऑल द बैंक्स आर टेलिंग अस कि गिव अस अ कोर्ट ऑर्डर, on the basis of a court order we will do that. We have had legal consultations with the right in the right forum, and we have created a kind of an SOP which we were just waiting for last legal vetting. Once it is vetted, we will be able to release it, and we will be able to address this problem. We should be able to address this. I mean, in the next few months we should be able to do this. The second part was, can you quantify the total number? Yes, I think I said 5,000 was the total number of complaints that are coming. Our estimate is that around 40 to 50% are originating from outside the country. Half the, and when I say outside the country, the countries that you mentioned, they are largely, or the gangs, not the nation state, but the gangs operating from those countries, they are running these scams. From China, Controlled, kind of, we have pockets in Cambodia and Myanmar as well. So we should not name only one country. There are, what we see is what we are doing. Yes, we are seeing Chinese apps. Yes, who is denying? 44. Am I on? Yes. Okay. Sir, I have 3 short questions. You mentioned how there's been a plateauing of the number of cyber crimes being reported. So, is there a plateau in? Are you seeing a plateau in terms of the crimes being reported or the incidence of crime itself? Okay. So now there is, how do we distinguish between crimes occurring, crimes being reported? Now, initially our outreach was very limited. 1930 was not there in most of the states. We increased it. We popularized the number as well.
through various handles, we are telling the public that please report. So what is happening? There was a surge. Maybe 1930 was picking up. Awareness was not that much. So now what the point I'm trying to make is that what was growing at 113% grew at 60%. Again, it's not an acceptable figure, but the rate of increase is decreasing. It's decelerating. It's not going exponentially. It is decelerating. So there is a point of inflection somewhere. So that was I was hinting at. Maybe because now in 2021 we had lesser number of people reporting. In 2023 we have a larger number of people reporting. Therefore, I use the term that it may be plateauing out. I cannot say for sure that it will not increase, but with the efforts that we are making, both ourselves, with law enforcement, with banking and telecom partners, we hope that these measures will help in reining in the volume of surveillance. Sir, and are you coordinating with the governments of China, Myanmar, Cambodia? Yes, those efforts are on. In fact, what has their response been? We we were able to get people back from Myanmar. So how many people and for what kind Perhaps of? I think I can't pick a figure onto that. I mean, MEA will be able to give a better figure, but yes, we were able to get people back from Myanmar. Okay, sir, and you also spoke about how a negative repository is being created on the I4C website. So, and about the API integration with NPCI and how banks, there will be API integration with banks as well. What is your error rate in terms of percentage and absolute numbers when it comes to this API integration? Okay, so when we say API integration, what we are telling, what we mean is this, that instead of somebody looking at a ticket that is escalated, the machine will identify the bank account and tell that this bank account is in the name of such and such person and the money has gone to the next bank. So we have eliminated the need for a person to sit, look at the ticket, pull out information from multiple databases and push it to the next bank, right? So this will save us a lot of time. So this is what the API integration is going to achieve. So, and how will this API integration work in terms of suspected numbers and URLs? Right. that So you're those are two different things. Okay. So let us not mix that. So if say you want to know whether a number is spam or not, how do you come to that conclusion? Truecaller? So we are Thank you very much for your kind presentation. One, the number you just mentioned here, 1930. If I made a complaint 1930, it will go through the CFCF RMS, and it will take time, or it will be immediately, it will be resolved. okay. So when you make a call to 1930, a police officer or a call agent, depending upon where you're calling, if you're calling from here, it will land in Delhi. The call agent will pick up the call, will listen to you, listen to your grievance, what exactly has happened, capture all the necessary information, type it. He may also ask you to give him some proof, because somebody can misuse that. So he'll ask you for some proof. Satisfy himself that yes, a fraud has happened, I need to act on that. So he's a police officer. So he will push that into CFCF RMS. So it will go to CFCF. Once it pushes your bank from where you have lost money, it will be intimated that look, your customer is telling us that he has lost his money. Your bank will immediately look into the database, where has the money gone. Tell CFCF RMS, look, I don't have the money, it has gone to this guy. So that bank gets intimated, my record in CFCF RMS gets updated. If it is outside the India, Okay, so that becomes a problem. That's why we are only at 12.5, 13% now. So, but it doesn't go outside India immediately. It takes layers. Criminals generally take layers. thank you very much. Thank you. Two questions here. We gather from your presentation that 31 lakh cybercrime cases complaints you received, and out of that only 66,000 FIRs were registered. So what happened to 30 lakh complaints? This is my first question. And second, government is also a custodian of large number of citizens of data, and also banks are under threat of cyber attack. How many cyber attacks banks have faced, and what
amount it involves, secondly, how many cyber attacks government have faced. Okay, so how do we, first of all, we come to the first question that you asked. That was why only 66,000 FIRs. FIRs are to be issued by the state police forces. In absence of a national platform, the only option that was available for a citizen is to go to the local thana. We have eliminated that need. The NCRP has eliminated the need for a person to walk into a thana and complain to an SHO. Our success is this, that we are now telling the states that this is your dashboard. Look at the dashboard. These are the citizens of your state or your union territory who wants to register a complaint. Now, why all of them are not getting converted into FIRs? By the way, many of them are getting converted into the non-cognizable reports, NCRs, what is called non-cognizable reports. So there are certain registers on which FIR is not, but nevertheless, we seek permission from the magistrate to investigate that case. Yes, this is one area in which we need to improve, and the states need to give more resources towards investigation of cybercrime. Coming to the point of how many attacks have taken place against government infrastructure, perhaps I think CERT-In will be a better organization to answer that. But I can tell you that it's a continuous process. In fact, even scanning is a kind of a cybersecurity incident as per classification, and that runs into lags. I mean, it doesn't get converted into a breach, but there are efforts are ongoing every minute. There are hundreds and thousands of efforts which are made from across the country, across the world, on the government infrastructure. In fact, during G20, if you can, G20 in 1 minute on the G20 website, on the day of the summit, we had around 16 lakh attacks coming. So if you can call, if you put a figure on that, we'll say that 1 minute, 16 lakh attacks coming. So it will be difficult for me to give an authoritative figure to the question that you asked. Banks will again. I think CERT-In will be a better position to answer that. 64. So yes. So no, not launching. This was during the summit when the summit was going on. Yes. They were trying a DDoS attack, distributed denial of service attack. So a lot of pinging was going so that the website goes down. But thankfully, all the agencies worked together and prevented that from happening. This peaked it around the G20 summit. This peaked around G20 summit. So it is the total number of attacks during G20 summit? No, during 1 minute. Sir, are you talking about 16 lakh different attackers? Okay, so when you do a DDoS, infrastructure, you send it multiple requests so that it is not able to handle that request and it goes down. So that was being planned. Yes, no, not discrete actors. It cannot be discrete actors. That's why on the distributed DDoS. So he creates a set of bots, and those bots attack on their behalf. So do you count that as one attack? One DDoS attack with 16 lakh? It's very difficult. We will call it a security incident. We will call it a DDoS attack. That's it. It continued. I think it started the moment the website went up months ahead. It peaked. The moment the website was malicious actors were targeted. It peaked during the summit, and thanks to the agencies of this country, we were the NIC, the CERT, ESOP, we were able to prevent it from happening. So you able to trace any specific from there or the delivery I think we can take it on Monday. सर मैं प्रशांत और न्यूज़ कैटेगरी बुनियादी सवाल ये है कि साइबर क्राइम विक्टिम जो भी होता हो पहले कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा अपने या पुलिस स्टेशन के पास जाएगा, और फिर रिकवरी रेट आपका कितना है, कितना फ्रॉड हो रहा है, कितना पैसा आप वापस दिला पाते हैं। रिमोट एरिया, रिमोट सिटीज में फ्रॉड हो रहे हैं, पुलिस के पास कोई ऐसा ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो उसको हैंडल कर सके। अभी आप इतनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो थाने का मुंशी है वो तो भगा देता है, हमसे मतलब नहीं है। बैंक वाला जान सकता है भाई जिसमें क्रेडिट हुआ, जिसमें डेबिट हुआ है,
रिकवरी कैसे करेगा कॉमन मैन? देखिए, आपके सवाल का पहले तो मैं इस बात से जानता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता है और ये रातों रात संभव नहीं है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग पर आपने देखा होगा कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन के जरिए फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ के ऊपर एचएम साहब हमेशा बात करते रहते हैं कि इसको फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। यस, अभी बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, और ऐसा नहीं है कि देश में सभी थाने का स्तर एक है, एवोल्यूशन में है, कुछ बहुत आगे हैं, कुछ बहुत पीछे हैं, रिकवरी परसेंटेज कम है। अगर हम देखें तो हम लोगों को अभी रिकवरी में वापस पैसे को व्यक्ति के खाते में लाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसका एक सवाल के जवाब में मैंने उल्लेख किया था कि उसके लिए हम लोग क्या हैं। तो आपका इनपुट मैं मानता हूँ, आपकी ऑब्जर्वेशन इज देयर, एंड we will be able to improve this is only thing that I can say कि जब शुरू में नक्सलिज्म शुरू हुआ था तो उस समय भी कैपेसिटी नहीं थी। आज देश we are almost all the state except for a few pockets we are free from नक्सलिज्म। तो शायद we need to work together with the state agencies and other stakeholders and improve this। हाँ, तो उसके लिए इसीलिए तो देखिए जब आपको आपने कहा थाने जाने की आवश्यकता है, आई एम सेइंग कि आपको थाने जाने की आवश्यकता को हमने एलिमिनेट कर दिया है। आप CF RMS में डालिए। पहला आपका पहला पड़ाव क्या होना, पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि पैसा तो पहले विदेश जाने से, क्रिप्टो में कन्वर्ट होने से या ATM के द्वारा बाहर निकलने से रोका जाए। दैट शुड बी द फर्स्ट कंसर्न। वो आप थाने में जाएंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। इसीलिए 1930 NCRP पोर्टल को इसलिए बनाया गया कि ताकि आप गोल्डन आवर के अंदर ही कंप्लेंट्स को फाइल कर दें, और आपका जो CF RMS है बिना थाने के गए CF RMS इसके लिए हो सकता है। आप 1930 पे कॉल करके कर सकते हैं या फिर NCRP पोर्टल पर। सर मैं कुणाल सर, मैं दो सवाल मेरे थे। जैसे आपने कहा कि 1930 पर आप कंप्लेन करें, तो एक चीज़ और कि गाँव के इलाके जो हैं वहाँ पर सबके पास मोबाइल में सब में लोग पढ़ते नहीं हैं क्या मैसेज आया, कितने फ्रॉड हुए हैं। नंबर एक चीज़ यहाँ चाहता है कि 1930 पर कितने कंप्लेन आए, कितनों को पैसे वापस कराने में आप सफल हुए हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात है, अभी आपने प्रेजेंटेशन बताया कि इतने जो सिम कार्ड से फ्रॉड करते हैं, तो क्या इसको बंद कर देंगे ऐसी स्थिति में जो सिम कार्ड देता है बल्क में, जैसे आपने बताया बंगलोर में होता है या तो क्या उसको अरेस्टिंग करवाते हैं? आपने ठीक सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो एक कोई बहुत मेजर नहीं हुआ, उसको ओरिजिन जहाँ है, क्या अभी कभी आपने उस पर कंट्रोल करने को, ओरिजिन रूट को ख़त्म करने के लिए क्या आपने तो कोई उपाय किया है? यस, तो आपको अगर जब मैंने GMIS प्रतिबिंब का आपको दिखाया था, तो अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने कॉल कहाँ से आ रहा है उसका लोकेशन बता दिया, उस लोकेशन के जरिए जुरिस्डिक्शनल पुलिस ऑफिसर उस पर एक्शन ले रहा है। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया। इसी चीज के साथ साथ जो यूएस सिम कहाँ से इशू हो रहा है वही उसी मैप पे दिखेगा। उड़ीसा या पश्चिम बंगाल से लिया हुआ सिम मेवात में यूज होकर के केरला में क्राइम कर रहा है, तो या तो केरला पुलिस को तो बहुत मुश्किल होगी आइडेंटिफाई करने में। यह सुविधा हमारे पोर्टल पर तुरंत आ जाएगी। सिम भी आप देख सकोगे किसने इशू किया है, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का एड्रेस, POS एजेंट का भी इस मैप पे आपको दिखेगा। और जैसे इस समय जामताड़ा और देवघर के जो लोग हैं वो एक्शन ले रहे हैं, 1 महीने में 454 अरेस्ट हुए हैं, तो उसी तरह से असम, बंगाल और उड़ीसा के लोग के पुलिस अधिकारी को भी जब दिखता है कि मेरे क्षेत्र से बेचा हुआ सिम आज केरला या लक्षद्वीप या फिर कर्नाटक में क्राइम के लिए उपयोग हुआ है, तो उसको एक्शन लेने के लिए हम कह भी पाएंगे। अगर हमको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहेगा यहाँ पर उनके स्टेट मुख्यालय में, उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर और उसके थाने में, तब एक्शन में डेफिनेटली सुधार होगा। दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग। अच्छा, 1930 पर 1127 is the money we have been blocked. The amount of money restored differs from state to state. National average is around 9 to 10%. 9 से 10% पैसे वापस हाथों में आ गए। 1127 crores is the total amount of money that have been blocked, out of which around 10%, again varies from state to state, but national average is around 10%, has gone back to the
victims. The origin of the attack was I'm not sure. Attribution is very difficult. See, in cyber security, you cannot attribute because I may use some other servers to attack. I may use a server from within India and attack you might be sitting in some other part of the country. So attribution takes time. So it will be wrong on my part to attribute it to a particular thing. Sir, are you concluding? Yes. Sir, I have three questions. One is related to total amount of investment, total cyber amount defrauded in the country for the year in all the 5 events that you gave. And total number of arrests after intervention by 190. Total number of arrests in the country? Okay, just let me have. Okay, so I can give you this figure. This one between 1st of April 2021, 1st of April 2021 to 31st of December. So we have lost 10,319 crore rupees. 10,319 crore rupees have been reportedly lost in India. This is from 1st of April 2021 to 31st of December 2023. Sorry, yeah, 2023. I mean, last 23. This last. This is the total, all frauds put together. All frauds put together. Sir, in that terms, recovery is less than 10%. Recovery is 10%. National, yeah. So it is growing year upon year. And the first year we started the system, it was around 6%. Sir, total arrest. My request is we are running up the time. So 4 बजे तक हमने शेड्यूल किया. Many others are also willing to ask questions. थोड़ा एक पूछ लीजिए सर. Total arrest. I don't want to give you a wrong figure, so perhaps it's not readily available to me. We can take it from there. सर, मनीष अग्रवाल लोंगा टाइम्स। इधर सर। इधर ही। जैसे सर सिम का साथ होता है कि सिम फर्जी नंबर पे ले लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे, ऐसे बैंकों में भी काफ़ी रहता है कि फर्जी दस्तावेज पे अकाउंट बनाए, दूसरे अकाउंट भी कराई के दिए जाते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन भी बैंकों को लगता है कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन हो रही है। मानो हमारा सैलरी अकाउंट है तो महीने के लास्ट में निकालेंगे, पहले निकालेंगे, तो उसका पैटर्न पता चल जाता है। तो बैंकों को भी इतना तो पता है, उन पे क्यों नहीं रोक रही है? इनफैक्ट आप जो कह रहे हैं कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इनफैक्ट बैंक्स आर रिपोर्टिंग, कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्टिंग करते हैं। क्योंकि जो पैटर्न है चेंज हो रहा है और डेफिनेटली शायद मोर रेड फ्लैग इंडिकेटर्स की आवश्यकता है। हमारा लगातार हम लोगों ने आरबीआई से भी बातचीत कर रहे हैं इस मामले में, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डायरेक्टली बैंक से भी, कि आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वी सी अ काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम द बैंक्स। जो म्यूल अकाउंट्स हमारे द्वारा नोटिस किए जाते हैं, चर्चा करते हैं उसको हम लोग म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। म्यूल अकाउंट्स हमारे नोटिस किए जाते हैं, हम उनको वापस उनको बता देते हैं कि देखिए ये आपके यहाँ का अकाउंट है, ये आपके म्यूल के रूप में यूज हो रहा है। उसके बेसिस पर कुछ बैंक्स ने मशीन लर्निंग का भी उपयोग किया है कि अगर इस तरह का हमें पैटर्न दिखे, देन दिस अपने फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में एक रेड फ्लैग निकल आए। तो हमारे जो इनपुट्स जो हम उनको देते हैं, किसने ओपन किया, किस ब्रांच से ओपन हुआ, उसके क्या क्या उसके साथ केवाईसी एसोसिएटेड थे, वो उनके फीड में चला जाता है। एंड देन दे ट्रेन देयर सिस्टम, दे आर ट्रेनिंग देयर सिस्टम कि हाउ टू प्रिवेंट मोर ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू अकाउंट्स। तो दिस विल बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहेगा। हमारी तरफ से हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होता है हम बैंक्स को बताते रहते हैं। होपफुली हमने आपने दिखाया होगा, स्लाइड दिखाया था एक, उसमें कुछ बैंक्स में आपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा होगा ड्यूल अकाउंट्स के इंसिडेंट्स, कुछ बैंक के साथ और हमें काम करने की आवश्यकता है। सर, अभी पैसा मिलने में, वापस आने में कितना टाइम लग जाता है ऑन एन एवरेज, और जो नई इनिशिएटिव्स आप कह रहे हैं उसके बाद कितना फर्क आ जाए? आई थिंक पैसा वापस मिल जाने में मुझे थोड़ा और टाइम हमें दे दें। As I said, I was answering an earlier question कि we are doing some legal consultations. We are in. अभी कितना है ऑन एन एवरेज? देखिए कुछ बैंक्स
it depends upon bank to bank, state to state vary कर रहा है, so एक average मैं बता दूँ तो शायद it will not be accurate. Mr. Kumar, one question here. You know, in the Israel-Hamas war also, the role of cryptocurrency, the use of cryptocurrency by Gaza and, you know, by the militants Hamas, US Treasury also sanctioned buy cash one particular cryptocurrency came up. Now, you mentioned that cryptocurrency redressal is very difficult. What is India's preparation and how many cryptocurrency frauds has your system tracked so far? And whether you have any evidence of an interface with terror organizations? Okay, thank you for answering that question, but I think cryptocurrency policy decision has to be taken at an appropriate by an appropriate organization. Then only, but yes, we do see usage of cryptocurrencies, and especially in these frauds which are being operated from outside the country. Cryptocurrency is used to convert it from the Indian rupees, the Indian fiat currency, into crypto and then taking it out of the country. So yes, there is an incidence, and if you ask me the exact figures of how many cases crypto has been seen, so there will be two categories in which the crime proceeds are laundered through crypto, and there will be cases in which there is a crypto investment scam. I mean, people are induced to invest in crypto. So I think readily, perhaps I do not have that number with me, but I would love to share it. Yes, sir, good afternoon. So this side, sir. I'm Sanjay Agarwal. My question is about OTP. So OTP, like you'd shown certain slide for the banks, and a lot of bank employees, I don't want to name the banks, the employees are in hand in glove. So they pass on the passwords and they give you the numbers. So do you go and do some due diligence and take some arrest? I think perhaps it's beyond our mandate to actually, unless we are not a law enforcement agency. So if such a thing happens and it gets reported to us, we need to escalate it to the concerned law enforcement, the state police or the union territory, and they need to take action. But yes, yes, there are chances of what we call the insider compromise, which may lead to leaking of confidential data. Thank you. Sir, I have two short questions. One is, as you have rightly pointed out that West Bengal, Odisha and Assam registered maximum number of cases with fraudulent SIM cards. So what could be the reason that scamsters are using these three states as hotspot? And so number two, what is the total number of arrests that have been done by law enforcement agencies in these states? Okay, so आपका पहला सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ कि इस तरह के सिस्टम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पहला बात। दूसरा क्या आएगा